Good morning, students. Welcome to online political science class with another area of the chapter, that is chapter 4, alternative centers of power. So in this chapter we are discussing about European Union. How did European Union came into being? Why did European Union came into being? What is the concept behind the formation of European Union? सो स्टूडेंट्स हमने अगली जो पहला वीडियो हमने देखा उसमें हमने क्या देखा, यूरोपियन यूनियन केम इनटू बीइंग बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए टफ एरिया, मेनली यूरोपियन एरिया, जो दे बिकॉज दे वर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे बिकम डिस्ट्रॉयड एंड disrupted. There was a bankrupt, there was loss of finance revenue due to the involvement of the small and larger countries in the Second World War. So because of all these things, they have wanted to redevelop their economy and they wanted to go with the not in individual way but in a group method. उन्होंने सोचा हम इंडिविजुअली जाएंगे तो डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा, इट विल टेक टाइम. So we will all join together and we will try to redevelop our economy. So they wanted to redevelop their economy and उसके साथ उन्होंने एक concept को रखा सामने में, that is integration of the European countries, integrated Europe. तो पूरी यूरोप को कॉम्पैक्ट उसमें लेके आना है और then they will try to redevelop their economy. तो हमने देखा how did with different conferences, बहुत सारा कुछ हुआ, and with different type of conferences and meeting, European Union came into being on the 2nd February 1992. Okay, but that time it didn't happen, and afterwards it became effective in 1993. Okay, 1993 में जाके वो काम करने लगा पूरा. So that was the beginning of European Union. Now here today we will again go to the journey of European Union, जहाँ पे हमने already किया एक part जो था हमारा economic influence. ठीक है, तो आज हम देखेंगे, we will see the other part of influence, that is European Union's political and diplomatic influence and European Union's military influence. Okay, so let's start. Now European Union's political and diplomatic influence. European Union has great influence on some policies of UN. जब UN policies मानता है उसमें बहुत सारा influence UN का influence में भी policies में भी वो influence करता है, because you just remember there are 27 member countries are there now in European Union. तो उसमें से बहुत सारा country they are directly member of UN, तो they are also they have some types of influence, okay, in making up the policies. जो भी कुछ लेता है यूएन टेक ओवर करता है. फिर its two members UK and France are permanent members of UN Security Council. तो UN Security Council में जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनमें से UK एंड फ्रांस दे वर दी परमानेंट मेंबर्स. पर अभी मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे मैं एक नाम काट रही हूँ, एक देश का नाम, बिकॉज टुडे UK इज नो मोर ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन. ओके, तो मैंने लिखा आपके जानकारी के लिए. Now I am cutting down this one. Okay, मैं ये क्रॉस देके रख रही हूँ. यहाँ पे अभी ये नहीं होगा, ये क्या होगा, it's one. Okay, it's one member, इसका ये भी काट दूंगी अभी. Okay, it's one member. Okay, France is, अभी R का मैं चेंज कर रही हूँ, ये मैंने लिखा है आपको दिखाने के लिए. तो it's one member. France is permanent member of UN Security Council. Okay, तो UK because of their own issues they have left this European Union in 2000. तो अभी 27 member है, उसमें से only France is the permanent member of the UN Security Council. So that also has some type of influence. ठीक है. Next, it has several non-permanent members of Security Council. तो Security Council का जो और भी non-permanent members है उसमें से भी बहुत सारे member European Union के हैं. कहीं ना कहीं they are creating some types of influence in the UN also. ठीक है. Next one is it has influence on arenas of diplomacy, economic investment and negotiation. So ये बहुत सारा word यहाँ पे लिया गया है, diplomacy, economic investment and negotiations. So in type of diplomatic relations they also have there some types of influence, these member countries in the world.
फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में तो है ही है, क्योंकि दे आर जॉइंटली डूइंग सो मच टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट. सो ये 27 मेंबर जो है दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट एंड दे आर ऑल्सो डूइंग इन्वेस्टमेंट इन दी अदर कंट्रीज. जैसे कि एशियन कंट्री में, चाइना में, अभी इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप हो रहा है. तो डिफरेंट जगह पे उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है ऑन द इकोनॉमिक investment. So they are creating some types of influences in the other countries also. Beyond their members, they are creating influence in the other member countries also. Okay, in diplomatic policies, in economic investment and in negotiation. ठीक है, तो नेगोशिएशन जैसे कि बहुत टाइप का डिस्कशन हो सकता है, जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स, टेररिस्ट प्रॉब्लम्स, ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम होता है ना देश का. So these types of common problem which are dealt by so many countries together, इसमें एक टाइप का influence European Union also has. Okay, they are also having some types of influence in this one. तो हमने देखा कि डिप्लोमेटिक एरिया में, नेगोशिएशन में, फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में they are having some types of influences, okay, creating in the world, not only among the members but in the other countries also. Next one is European Union's military influence. Now military influence में देखिए, European Union combined armed forces of EU are second largest in the world. तो combined armed forces, तो first arm किसका है? US का obviously, और the second largest combined forces किसका है? European Union का. 27 member countries का armed force together काम कर रहा है, तो largest होगा ना, ऑटोमेटिकली largest. ठीक है. Then its total spending on defense is second after US. Obviously, तो ये second हो largest है armed forces में, तो उसका defense जो खर्चा है that is also second to US. ठीक है. Next one is its members UK and France have nuclear arms. तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा काट देती हूँ. तो कौन सा काटूंगी मैं? यहाँ पे UK. Okay. So its member France have nuclear arms. So we all know that France is a nuclear country. So that is also having some type of influence, okay, in the world also, okay, in the European Union and in the world. ठीक है. Next, it has world's second important source of space and communication technology. Space, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी उनका जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी उनका बहुत एक रुतबा है, बहुत स्टेटस है, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग सो मच थिंग, दे आर डेवलपिंग सो मच थिंग बाय जॉइंट वेंचर्स ऑफ 27 मेंबर countries. Okay, so ये जो 27 member countries, they are integrating Europe, and while integrating Europe economically, they are also going politically. They are turning, European Union is turning from economic one to political one. एक political combination में वो खड़ा हो रहा है धीरे धीरे. So it is having a great type of influence in the whole world. European country में तो है, but in the other countries also, other area में भी they are creating some types of influence, even in the Asian continent also. So European Union has a great influence. इनका हमने 3 area को देखा. One is economic area, one is political and diplomatic area, and one is military area. So everywhere they are having a type of influence. Beyond that, they are having their own anthem, they are having their founding date, they are having their currency. Okay, so they are having their flag also. So it is a very great thing for European Union. So European Union is successfully working today, but सब कुछ एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म में तो आता है. तो इसमें एक क्रिटिसिज्म ऐसा है कि 2000 में ब्रिटेन ने कुछ इश्यूज के कारण वहाँ पे उन्होंने क्या किया, दे डिडंट वांटेड टू एंटर इनटू द यूरोपियन मार्केट. वो मेंबरशिप तो था उनका, बट दे डिडंट वांटेड टू एंटर इनटू द यूरोपियन मार्केट बिकॉज दे डिडंट वांटेड टू adopt the currency of European Union, that is euro. They didn't wanted to adopt the currency of European Union, that is euro, and because of their thing, okay, एक बहुत बड़ा ये issue था, because of which they didn't wanted to have the membership in the market of European Union. तो उनका ग्रुप मेंबर का जो एक मार्केट है उसमें उनका योगदान उनको नहीं करना था. They didn't wanted to participate in that मार्केट एरिया ऑफ यूरोपियन यूनियन. और उसके साथ और भी कॉमन कुछ इशू आया है, बिकॉज ऑफ विच ब्रिटेन हैज लेफ्ट यूरोपियन यूनियन इन 2000. तो मेंबरशिप हैज डिक्रीज फ्रॉम 28 to 27. ठीक है.
और भी 2 कंट्री है जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, दे डिडंट वांटेड टू अडॉप्ट यूरो. कुछ कंट्री ने यूरो को अडॉप्ट नहीं किया, ये आप याद रखना. या यूरो वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन, बट सम ऑफ द कंट्रीज दे डिडंट वांटेड टू गो विथ यूरोपियन यूनियंस का करेंसी, दैट इज यूरो. दे वांटेड टू हैव देयर ओन करेंसी. ओके, उसके कारण भी कुछ कभी कभी इश्यू हो जाता है. अदर देन दैट, European Union is a great organization, that is regional organization operating in the European countries and creating influence in the other parts of the world also. Okay, so this is all about European Union. Students, just try to grow through the video slowly and try to understand it as much as possible. Okay, so thank you students.